Hello and welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. This is your host and दोस्त आमिर. आज हम बनाने वाले हैं pickles which are easy to make and yummy to taste. And I'd be suggesting you to make these pickles in advance and keep so that you don't miss out on the further episodes. Also, please like, share and comment. Thank you. So we've got some fresh cucumbers, red onions, spring onion bulbs, some carrots. उसके साथ हमारे पास है कुछ होल स्पाइसेस जैसे स्टार अनीस, थोड़ा सा क्लव्स या लवंग जो हम कहते हैं, और उसी के साथ हमारे पास है ब्लैक पेपरकॉर्न्स and we've got cinnamon sticks as well, which will give nice flavor and aroma to our pickles. And we've also got some beetroot with us, which is very rich in fiber and good for skin. With that I've got some fresh red chilies and green chilies and some salt and also some sugar, and we've got some garlic cloves. So let's begin. So we'll start off by cutting our vegetables. I'm gonna cut it into finger size or even called as batons. आप कोई भी shape में कर सकते हो. You can cut it in small dices or roundels or any sort of shape you want. But make sure that whenever you are cutting your vegetables that it is small in size. Don't cut it too big. अगर आप ज़्यादा ही बड़ा उसको cut करोगे तो उसमें जो brine है, जो solution है हमारा vinegar और water का, that is not going to seep in. So please do make sure कि आप vegetables को छोटे cuts करें. For tender vegetables like cucumber and onion, you don't have to blanch it. आप वैसे के वैसे ही उसे उस जार में रख सकते हो. You don't have to cook it at all. तो मैंने जार को क्यूकम्बर से हाफ फिल कर दिया है और उसी के साथ मैंने हमारे ड्राई स्पाइसेस और थोड़ी सी चिली और गार्लिक डाल दिया है. काफ़ी लोग ड्राई स्पाइसेस को पहले ही डाल देते हैं, बट आई फील कि वो सही से मिक्स नहीं हो पाता है. सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस. So once you're done putting with the spices and the chilies, you can stuff it up with the rest of the cucumber and fill the jar completely. I'm gonna cut off the onions into quarters. You can slice it, you can make roundels out of it, and you can add it in your pickle. You can do completely any shape. मेरे पास कुछ स्प्रिंग अनियन बल्ब्स भी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट इनटू हाफ एंड पुट इट इन द जार एंड रिपीट द सेम थिंग व्हाट आई डिड विद द cucumber. Cover your jar completely with the vegetable so that your vegetable do not float on top and it gets covered in the brine properly. I'm gonna slightly blanch the carrot so that it does not stay raw and also stays a little crunchy. We are going to continue the same process with carrot as well. If you want, you can put some dry or fresh ginger in your carrot jar and then let it pickle. I'm going to blanch the beetroot a little more so that it's cooked properly. And repeat the same process. Making a brine solution is very easy. Equal parts of water and equal parts of vinegar with some salt and some sugar. Let the sugar and the salt dissolve properly. Mix it nicely, give it a boil, and then you can add it in your jar. ध्यान रखिएगा कि वेजिटेबल्स कम्प्लीटली कवर हो जाने चाहिए. इफ़ इट डज़ नॉट कवर प्रॉपरली, आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और ऊपर से उसे भर दीजिए सो दैट वेजिटेबल्स ब्राइन सोल्यूशन के अंदर ही रहे. उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, टू स्टेरिलाइज द जार. हम स्टेरिलाइज इसलिए करते हैं सो दैट बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो और शेल्फ लाइफ हमारे पिकल की बढ़ जाए. उसके लिए जार को आप गर्म पानी में फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए. मेरे पास छोटा बर्तन है तो मैं उसे टर्न बाय टर्न हर जगह से स्टेरिलाइज कर रहा हूँ.
Once it's sterilized properly, remove it with a clean duster and continue it with all your pickle jars. I'm making these quick pickles because आगे की recipes काफ़ी interesting है and we are going to use these in our further recipes. If you liked this video and found it helpful, then please do hit the like button and subscribe to my channel. If there are any dishes which you would want me to make, then please do comment and let me know. See you soon. Adios, amigos.